सबका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्याश्री क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स में टाइप दैट इज़ कॉजेटिव सेंटेंसेस। आइए सीखते हैं और समझते हैं कि कॉजेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है और ये किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। गाइस, कॉजेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कॉजेटिव वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हैव, हैड, कीप, गेट, लेट, मेक, हेल्प। तो ये मेनली यूज़ होने वाले कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिन्हें हम कॉजेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और इनका इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते किन्हें हैं। कॉजेटिव वर्ब्स, जब हम बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स की, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लेट, गेट, मेक, हैव, हेल्प, कीप, स्टार्ट, ये सब वर्ड्स कॉजेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। हम ज़्यादातर लेट का इस्तेमाल करते हैं, मेक का, कीप का, हैव का, गेट का, स्टार्ट का, इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम कॉजेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। ओके गाइस, अब ये कॉजेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? गाइस, हमें जो बात समझनी है वो ये, कॉजेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो अपना कार्य खुद नहीं करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्जेक्ट अपना काम स्वयं नहीं करता। इट मीन्स या तो वो पे करेगा अपने काम को ख़त्म करवाने के लिए, फिनिश करने के लिए किसी और को। ओके, सो इट मीन्स in causative sentences, the subject will not do his work by himself or themselves. Okay, is this point clear to you? Okay, so जो verb हम इस्तेमाल करते हैं जैसे let, make, start, help, have, had, keep, ये जो verbs हैं जिन्हें हम causative verb कह रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई काम जो है वो किसी के द्वारा होगा, होता है, हो रहा है, हो चुका है। ओके, ऑल राइट। इसके अलावा ये जो सेंटेंसेस होते हैं, कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें जो हम कॉजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं ये क्या इंडिकेट नहीं करते? दे डोंट इंडिकेट समथिंग द सब्जेक्ट डिड फॉर देमसेल्व्स। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट अपने लिए कुछ काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। इट मीन्स कॉजेटिव सेंटेंसेस इंडिकेट्स only the work done by someone else, okay, for the subject or to the subject. I hope this point is clear to you all right. And also these sentences and these verbs, they tell us about something that subject got someone or something else to do for them. I hope this is clear that what type of sentences are the causative sentences and what type of verbs, those are called as causative verbs, because most of the time while framing causative sentences we use these verbs. That's why we call them as causative verbs. All right. Now see the pattern. What is the pattern when you are framing the causative sentences? आपका subject होता है, इसके अलावा आप कौन सा causative verb इस्तेमाल कर रहे हैं? As per the tense rule, you can use it. Get, let, make, have. It totally depends on you कि आप इसको किस फॉर्म में यूज़ करेंगे. Okay, according to the tense. Then the person, okay, which person, जो आपके लिए काम कर रहा है, करता है, करेगा, that person, okay,
plus base verb. Base verb mean that the verb that it will remain same. Okay, there is no change in the verb and then the object. ये जो बात मैंने कही बेस वर्ब की, जिसमें वर्ब चेंज नहीं होता, वो सेम फॉर्म रहती है वर्ब की, इट मीन्स वो एक्टिव कॉजेटिव जो सेंटेंसेस रहेंगे उनमें ही ऐसा होगा. लेकिन अगर आप पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनमें जो आपका बेस वर्ब है वो बेस वर्ब ना होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. दैट इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर आप कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं, अगर आप पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज पैसिव कॉजेटिव आफ्टर explaining you active causative sentences. Okay, so first concentrate towards active causative. Okay, all right. Now if we talk about the causative verb get, so what does it indicates? Where we use this causative verb get? When we convince someone to do something. ओके, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप किसी को कन्विंस करते हैं कोई काम करने के लिए, वो आपके लिए कोई काम करे, तो वहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे. तो यानी कि आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, देन अकॉर्डिंग टू द टेंस यू विल यूज द कॉजेटिव वर्ब गेट. ओके, देन द पर्सन जिससे आप काम करवा रहे हैं, एंड देन +2 प्लस वर्ब. ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. ऑल राइट, जैसे यहाँ देखिए, हाउ कैन आई गेट माई किड्स टू यूज लेस मोबाइल. हियर यू कैन सी, हाउ कैन आई गेट. ओके, causative verb. I is a subject here. How can I get my kids to use less mobile? It means आप उनको मोबाइल का कम इस्तेमाल करना नहीं सिखा पा रही हैं, आप किसी और से उस काम को करवाना चाहती हैं, इसीलिए आप कह रही हैं हाउ कैन आई गेट माई किड्स टू यूज़ लेस मोबाइल. ओके, नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, what can I get from you to finish this work? ओके, अगर आपका काम जो है किसी और का काम जो है, ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वो पर्सन हो जाएगा कि जिसका वो काम है वो अगर कोई ख़त्म करता है, तो यानी कि जो सब्जेक्ट है वो खुद वो काम नहीं ख़त्म कर रहा है, वो किसी से उस काम को करवा रहा है और वो कह रहा है कि अगर वो काम ख़त्म करेगा तो उसको क्या मिलेगा. Are you getting? So in this way also you can use it. How can they call me to home? Okay, यानी कि आप खुद जो है उनके घर नहीं जा रहे हो, वो उन्होंने आपको क्या किया है, कॉल किया है, और आप कह रहे हैं कि हाउ कैन दे कॉल मी टू कम, कि वो मुझे किस तरह से बुला सकते हैं आने के लिए. सो हियर व्हेन द अदर पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर यू एंड यू आर नॉट इन्वॉल्विंग for that particular work or for that task, it means such type of sentences are the causative sentences. I will explain it to you with more easy example. आप बस वीडियो में बने रहिए और हर बात को बड़े आराम से और ध्यान से अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि कॉजेटिव सेंटेंसेस बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इनमें, जबकि कंफ्यूज होने वाली कोई बात इसमें नहीं है. हमें इसे आराम से समझना होगा और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे. हमें जो बातें इसमें ध्यान में रखनी हैं वो यही कि हमारे जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी कार्य खुद नहीं करता, वो किसी से करवाता है. और जब हम सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कॉजेटिव वर्ब जो है उसकी कौन सी टेंस फॉर्म में हम उसको यूज़ करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए, नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब जो है वो है लेट.
हम let वर्ब का इस्तेमाल कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, जहाँ पर हमें परमिशन जो है वो अलाउ करते हैं किसी को. परमिट समथिंग टू हैपन व्हेन वी अलाउ समबडी टू डू दैट वर्क. Okay, so how you will use it? The same way, the subject will be there, then your causative verb will be there, then the person who will do that work will be there, then the thing, and then the object or the main verb. Okay, let's see how. Will your class teacher let you to take a leave? तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो क्लास टीचर है वो तुम्हें छुट्टी देगी क्या. विल योर क्लास टीचर लेट यू टेक ए लीव. क्या वो तुम्हें छुट्टी लेने देंगी. तो इट मीन्स तुम खुद छुट्टी नहीं ले रहे हो, वो तुम्हें क्या छुट्टी लेने देंगी. तो समथिंग वेयर समवन will allow you to do that work. It means you are not allowing yourself, some other one is allowing you for that. Will your mother let you go to your friend's birthday party? It means you can't go without her permission. So क्या वो तुम्हें allow करेंगी, right? So will your mother let you go to your friend's birthday party? Okay, now like this, let them enjoy their holidays. Okay, it means your mother is telling, your father is telling, or some other one is telling, let them enjoy their holidays. It means someone is allowing you to do enjoyment, to do fun, to enjoy your holidays. All right, so I hope you're getting my point that causative sentences are what type of sentences. These are those type of sentences in which the subject needs permission of someone, or the subject give permission to someone, or you can say where the subject is not the doer, where the other person is the doer for the subject. All right. If you will finish your work on time, I will let you watch your favorite show for an hour. अब आप यहाँ देखिए जैसे कि हमने दो sentences को combine करके किया. If you will finish your work on time, I will let you. It means someone will allow you to watch your favorite show. It means by yourself you can't see it. When you will get the permission, after that only you will be able to watch it. Are you getting? Yes. So in this manner we use the causative verb let. Okay, let's look the another causative verb, make. Yes. So where we use this causative verb make, when you force someone to do the work, which work you can't do, you don't want to do, you want that other one will do it for you. So you are forcing someone to do that something for you. Okay, again the subject will come, then make will come according to the tense use, according to the tense rules. Okay, you will see that it will come make or made, then the person who is going to do that work for you, and whatever thing is there or verb is there that you need to write. Let's see how. I just made number of examples. With examples I try to make you understand that what type of sentences where we can use it. Use these causative verbs to frame causative sentences. These causative verbs are there in those sentences. Okay, so that's why those sentences are called as causative sentences. And second identification is this, that in such sentences there is something where which is representing that work is not done by the subject. The subject is making someone else to do his or her or their work. All right. Okay, some we are taking permission, some we are allowing, okay, giving permission. Okay, like that way. My sister makes me finish my work. So according to tense rule, I wrote here makes, because the sister, that is third person, talking about third person. So here instead of make, I wrote makes. My sister makes me finish my work. Those students who watched my
tenses videos. Okay, so it's very easy for them to frame sentences, and they will be able to understand that which type of tense rule when they are using the causative verb there will be take place. Okay, my sister makes me finish my work. Your mother makes you reach on time. It means your mother is making you, okay? By yourself you're not doing that. Your mother makes you to do that. So her sister makes her to finish her work, okay? It is like this. His brother makes breakfast for him every day. It means he by himself is not making his breakfast every day. His brother makes, okay? A principal can make his teachers do good work for their school. It means under the guidance of the principal, teachers are doing good work for the school, a kind of that way. Okay, I am an adult. You can't make me react on stupid things. When it is also like this, when someone is what? Means someone is not able to make you do like that way. Okay, so in that case also you can say it like this use of make. I hope you understood the use of causative verb make when you want someone to do something for you. All right. Okay, now here is the next causative verb. It is have. Sometimes we use had also. It completely depends on the sentence, that which tense the sentence is of. Okay, so according to the tense rule you have to use have or had. So here I am explaining about have. So when you are talking about have or had, it means that give someone else the responsibility to do something. So there we use this causative verb. Let's see how. Like subject is there, then have or had will be there, then the person who will do, to whom you give the responsibility, okay, and the verb or the object. Please have your elder sister send me the homework. So here the elder sister got the responsibility of sending the homework. Okay, please have your elder sister send me the homework. He have plumber fix the water pipe leakage. It means by himself he is not going to repair the water leakage. So the plumber is having that responsibility to fix it. Tomorrow I will have an important meeting. It means someone gave that important meeting notice, and then you have that meeting to go. Okay, so tomorrow I will have an important meeting. All right, so in such type of sentences we use the causative verb have. My dear students, I am trying to make the causative in active and the passive causative. Okay, so to make you understand it in more better way, so here many more examples I made for you all. Please continue watching the video so that you will not leave with anything. Okay, and the point and the concept must be clear to you at the end of the video. Okay, now see the difference between active causatives and passive causative. So what is the difference between active causative and passive causative? Okay, let's make it to you clear. Okay guys, when we talk about active causative, as I explained you that we use some of the very common causative verbs that indicates that the work that the subject wants, that subject those works not do by themselves, if that subject makes other one to do that work for him or her. Okay, so the causative verbs like have, let, make, get, keep, start, stop. Okay, so these are used when one person is causing another to do something. Understood? And on the other side, when you are using the passive causative, okay, तो अब बात करते हैं
द पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू need to understand about passive causative where we use it has mainly two types of ways where we can use them. The very first thing when we use passive causatives, it is to talk about something bad that happened to us. Okay, like someone had lost the keys or stolen the keys by someone, like this, where you can say, and the set anything bad if something happened. So such type of sentences also falls under passive causative. And the other thing that, like, second reason why we use passive causative, that is to talk about a service that has been done for us. Okay, it means we are not interested in that who served us. ओके, यानी कि पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें यह आप पर निर्भर करता है कि जिस सेकेंडरी पर्सन जिसके द्वारा आपने काम करवाया है या जिसने आपका काम करा है, आप उसको दर्शाना चाहते हो या नहीं दर्शाना चाहते हो आपके सेंटेंसेस में. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर, यू आर एसेंशियली सेइंग समवन काज समथिंग टू बी डन. मीन्स कोई काम किसी के द्वारा आपके लिए किया गया. पैसिव पॉजिटिव में आप उसको दिखाना चाहते हो या नहीं, it's completely dependent. Otherwise, the two main things that when you frame passive causative sentences, one, when there is something sad about something, and the other thing that you are not representing, you are not targeting the doer who has done the work for you. Okay, I hope you understood the difference between active causative and the passive causative. All right. Now see here, I had made some sentences, right, and showed a kind of pattern also here under difference between causative pattern and the passive pattern. Okay, so what are that? Let's understand it once again. Like, so first of all, this thing is clear to you. That means under passive causative you use the service, so you are not paying attention towards who gave you that service. So you just interested in your service, whatever you got under service. Are you getting? आपने क्या काम किसी से करवाया है, आपको काम से मतलब है, किसने किया है उससे मतलब नहीं है. So such type of sentences falls under passive causatives. Okay, all right. So this verb forms combine causative verbs, which shows that someone is causing someone else to do something. Right, this is for causative verbs, and right, whereas if you talk about when you're framing the passive voice of the causative sentences, it means when the focus is on the thing, not on the person. I hope this point is clear. The difference between causative and the passive voice means the passive causative is clear to you all. Let's see with the examples once again the difference between causative and the passive causative. Now see here, like subject will be there, then which causative verb you want to use, that will be there, like have, let, make. So dear student, remember, whenever you are using the causative verbs like have, get, so take care of this thing, that because they can change into the three forms of verbs also. According to the tense form, you need to change them, okay, as per the sentence and the tense rule. Okay, don't forget that thing, otherwise let will be like that way. So now see here, subject, have, let, make, it's up to you, then base verb, and then the object. What does it mean by subject? It means the person jiska kaam hoga. Then any tense, according to that you will change the form of these causative verbs. Then your base verb will be there, so no tense, the secondary person, the verb which will be there, so no change in that verb in case of causative pattern. Okay,
But when it comes to passive pattern, then there will be change in the base verb. But in case of causative pattern, your base verb will remain same, means it will not follow the tense rule. Understand this thing, okay? But if we talk about the causative verbs which you are using under causative pattern, okay, not the passive, I am talking about the causative pattern. So the causative verbs, they will follow the tense rules, but the base verb will not follow the tense rule. Take care of this, right? And then the object. Okay, it means any agent, any person who is doing that work for you, that will be there, right? Like here, the man had the mechanic fix his vehicle. So fix, you can see here no tense change. So fix remain fix, right? The first form, the base verb remain fix. Okay, so here have changed into had. That is according to the sentence, that is tense rule. The man had the mechanic fix the व्हीकल. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू यू. मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, जिन बच्चों ने टेंसेज समझे हुए हैं उनके लिए कॉजेटिव वर्ब्स को, कॉजेटिव सेंटेंसेस को समझना और भी आसान है. इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस को बनाने के. आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले और इजी तरीके समझाऊंगी कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में हम कैसे करते हैं. ओके, इन अवर स्पोकन इंग्लिश. सो बी कंटिन्यू विद द वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो, otherwise incomplete knowledge is not good for you. Okay, so now the passive pattern. What will be the passive pattern then? Like here, subject will be there, then active, this your passive causative verbs will be there. So you are going to change them also according to the tense rule. Verbs third form will come. Okay, so this is the difference. The past participle form of the verb you are going to write there in case of passive pattern. किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं पैसिव कॉजेटिव में? या तो उदासी भरे, जहाँ कुछ गलत हो गया हो आपके साथ, कुछ बैड हो गया हो, और या फिर जहाँ पर आपको काम से मतलब है लेकिन किसके द्वारा वो काम हुआ है उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर आप जो वर्ब यूज़ करेंगे सेकेंडरी, ओके, दैट विल बी the past participle form. So just remember this thing, and it's completely dependent on you that you want to talk about the secondary person or not in that sentence. Okay, let's see with examples. His vehicle was fixed. Now who fixed the vehicle? So this is understandable that mechanics, right? A mechanic can does that work. Okay, so no need to tell about that, right? The man had fixed his vehicle. Okay, so the man, who? It means mechanic maybe, right? The man got fixed his vehicle. So here you can see how I changed the causative verb also. Like here wrote was, had, got. Okay, so I changed them according to the tense rule. And the verb which I use, that is fix. And here, because this is a passive pattern, so instead of first form of verb of the fix, what I used, I changed the base verb into third form of the verb, that is past participle form. So here I use fixed. I hope the point is clear to you regarding passive causative, and the two basic things when we frame these passive causative sentences, when something about sadness, and the other thing that you are using the past participle form for the base verb. Okay, now dear kids, this is the time when you are going to practice
causative sentences in a very easy way. Okay, in our day-to-day life, how we use causative verbs to frame easy sentences and how can you use them. देखिए, आपको सीखना चाहिए, तो चाहिए है तो should, would इस तरह से चलता है. सो आप कैसे कहेंगे? आपको सीखना चाहिए, you should learn. ओके, आपको सीखते रहना चाहिए, यू शुड कीप लर्निंग. अब हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें कैसे बोलना होता है. तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न. आपको सीखते रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू कीप लर्निंग. आप सीखने लग जाया करते थे, यू यूज्ड टू लर्न. राइट, तो देखिए जैसे शुड, कीप, हैव टू, विल हैव, यूज्ड टू, देखा कीप. सो वी आर यूजिंग द कॉजेटिव वर्ब्स देयर ऑल्सो. राइट, सीखना शुरू करना, स्टार्ट लर्निंग. जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शुरू करना मीन्स स्टार्ट करना. स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट स्पीकिंग इन दैट मैनर. और आप वो खुद नहीं कर रहे, आपको जब कोई दूसरा वो काम करने के लिए कह रहा है तो इट मीन्स वो काम जो है वो आपके द्वारा नहीं, यानी कि किसी और के द्वारा आपके लिए किया जा रहा है. बोलना बंद करना, स्टॉप स्पीकिंग. बोलने देना, लेट स्पीकिंग. तो जब कोई काम किसी और के द्वारा आपके लिए किया जा रहा है तो उस तरह के सेंटेंसेस कॉजेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सेंटेंसेस को बोलना कैसे होता है. अगर बोलना बंद करना तो स्टॉप स्पीकिंग. बोलने देना, लेट स्पीकिंग. बुलवाना, किसी से बुलवाना, यानी आप नहीं बोल रहे हैं, किसी से बुलवा रहे हैं, तो मेक स्पीक. यहाँ पे स्पीकिंग नहीं कहेंगे, मेक स्पीक. ओके, बोलने देना, किसी को बोलने देना, यानी कि लेट स्पीकिंग. ओके, बोलना बंद करना, स्टॉप स्पीकिंग. बोलते रहना, कीप स्पीकिंग, कीप लर्निंग. ओके, देन अब कुछ एग्जाम्पल्स और तरीके से भी देखते हैं. क्या आप मुझसे काम करवा सकते हो? कैन यू मेक मी डू वर्क? देखिए कितना आसान है. क्या आप मुझसे काम करवा सकते हो, यानी कि आप खुद नहीं कर रहे हो, कोई आपसे करवाएगा. तो सिचुएशन जो है थोड़ी रिवर्स है. ठीक है, तो कैन यू मेक मी डू वर्क, क्या आप मुझसे लिखवा सकते हो? कैन यू मेक मी राइट? क्या आप मुझसे ये काम करवा सकते हो? कैन यू मेक मी डू दिस वर्क? आर यू गेटिंग? तो ये कॉजेटिव सेंटेंसेस ही हैं जिनमें हम मेक, हैव, लेट, स्टार्ट, स्टॉप इन कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो जो बातें हमें याद रखनी हैं, ठीक है, कुछ कॉजेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ कॉजेटिव वर्ब्स जो हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और छोटी छोटी जो डे टू डे लाइफ में हम चीज़ें और वर्ड्स बोलते हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें बोल बोल के. ठीक है, एक प्रैक्टिस अभी क्लास के दौरान हो जाए. लेट्स स्टार्ट. देखो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट, इट मीन्स मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप खुद नहीं कर रहे. तो मैंने कैसा सेंटेंस बोला? मैंने कॉजेटिव सेंटेंस बोला. लेट्स प्रैक्टिस. ओके, यस. जिन्होंने बड़े ध्यान से सुना और समझा है उन्हें मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और जिन्हें नहीं समझ में आई है वो वीडियो को दोबारा देखें और आराम से इसको समझें. इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. ओके, कॉजेटिव वर्ब्स कौन सा वाला हम यूज़ करने वाले हैं? पॉजिटिव वर्ब, किसी काम को करने लगना, शुरू करना. तो हम कहेंगे टू स्टार्ट. हम क्या कहेंगे? टू स्टार्ट. वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगा देंगे वहाँ. ये मैं अब आपको और इजी तरीके से अब समझा रही हूँ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए. जैसे कि स्टार्ट स्पीकिंग, तो आप देखिए स्पीक जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है और हमने उसके साथ ing लगा दिया. स्टार्ट को हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ काम करवाया जा रहा है, खुद नहीं किया जा रहा. स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट लर्निंग, यू शुड स्टार्ट डांसिंग. खुद डांस नहीं करना है, किसी से करवाया जा रहा है. यू शुड स्टार्ट डांसिंग, तुम्हें डांस शुरू करना चाहिए. यू शुड स्टार्ट सिंगिंग, तुम्हें गाना शुरू करना चाहिए.
यू शुड स्टार्ट वर्किंग, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो आपने देखा किस तरह से हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम टू स्टार्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाकर हमने नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस, कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाए। अब वहीं अगर आप स्टॉप की बात करें, किसी काम को बंद कर देना या बंद करवा देना, लेट्स सी हाउ टू फ्रेम स्टॉप स्पीकिंग। तो ये हम नहीं जब कर रहे, हम किसी को करवा रहे हैं। स्टॉप लर्निंग, स्टॉप वर्किंग, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर, यू शुड स्टॉप इंटरप्टिंग बिटवीन, यू शुड स्टॉप चेजिंग हर, यू शुड स्टॉप डिस्गाइजिंग, यू शुड स्टॉप डिफेमिंग हर। तो आप देखिए हम किस तरह से टू स्टॉप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब वही होते हैं जिनमें दूसरों के द्वारा काम करवाया जाता है, किया जाता है, सब्जेक्ट वो काम नहीं करता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब ज़रा टू लेट पॉजिटिव वर्ब से कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। किसी को काम करने देना या किसी को परमिट करना किसी काम के लिए, तो हम टू लेट का पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सब्जेक्ट होगा और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जबकि जब हमने क्या इस्तेमाल किया था, जब हमने स्टॉप का इस्तेमाल किया तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाया, और जब हमने स्टार्ट का इस्तेमाल किया, टू स्टार्ट पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया, तब भी हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाया। लेकिन जब हम टू लेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे, हम ing का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट हिम टू गो देयर, तो हम किसी को अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। लेट हिम टू accompany you, you have to let her enjoy, they have to let themselves free। ओके, तो जब हम किसी को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, तो तब हम टू लेट पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऑल राइट, चलिए अब इसी तरह से टू मेक पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक पॉजिटिव वर्ब जब किसी से काम करवाना होता है तो हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ मेक लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म, लेट के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म और मेक के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म, ing ऐड नहीं होगा। टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, ही मेक्स हिम ड्रेस अप वेल। अब आप देखिए यहाँ मेक के साथ एस लग गया, क्यों? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और ये बात उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होगी जिन्होंने टेंसेस के सेंटेंसेस किए हैं और उनके रूल्स समझे हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में जाइए, लर्न इंग्लिश विद दिव्याश्री, उसमें टेंसेस देखिए। मैंने हर एक टेंस की अलग अलग वीडियो बनाई है और उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। डू वॉच देम। ओके, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, उन्हें सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप और जो मैं वीडियोस बनाऊं, डेली अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस टॉपिक। सो हम जो पॉजिटिव वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो है टू मेक। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, ही मेक्स हिम ड्रेस अप वेल। इट मीन्स काम किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो। शी मेक्स हर पेरेंट्स टू एंजॉय वर्ल्ड ट्रिप, दे मेक देयर क्लास टीचर फील स्पेशल। ओके, ऑल राइट, नाउ टू कीप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करके देखते हैं। करते रहना या करते रहता हूँ, लाइक दैट वे ऑफ सेंटेंसेस। टू कीप के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगा सकते हैं। आई कीप लर्निंग, आई कीप लिसनिंग, दे कीप कमिंग, यू कीप कंप्लेनिंग, शी कीप्स प्रैक्टिसिंग। तो देखा, इस प्रकार से हम टू कीप एक पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कीप, इन अदर वे कैन से कीप पॉजिटिव वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाकर। तो ये मैं इजी वे में और आपको समझा रही हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू डू एंड लेट हर डू। देखा,
खुद करो और उसको भी करने दो, लेट हर डू। तो यहाँ लेट आपका पॉजिटिव वर्ब है। डू दे ऑलवेज कीप डूइंग कंप्लेंट्स, है ना, डू दे ऑलवेज कीप, so keep doing complaint। now here see keep के साथ जो do है is a verb और उसके साथ हमने verb की पहली फॉर्म के साथ ing लगा दिया। now see the next, I keep speaking English। तो keep जो है, ठीक है, वो आपका causative verb हो गया और speak के साथ हमने ing लगा दिया। speak आपका verb की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing। I have started speaking English। तो आप देखिए यहाँ पे आपने started क्यों लिखा है, according to the tense rule। okay, so I have started speaking English। you should keep practicing English। so keep का इस्तेमाल, you should let yourself practice more, है ना, let। they make themselves confident, she makes her confident। did she make herself confident? What did she make herself? So in this way we frame the sentences। so my dear students, I hope through this video you understood the difference between the active causative and the passive causative sentences, right? The rules are very simple. These are those types of sentences in which the subject subject never does his or her work by themselves। वो किसी से काम करवाता है या कोई और उसका काम करता है। ओके, और जब बात पैसिव कॉजेटिव्स की आ जाती है तो उस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनमें या तो कुछ सैड आपके साथ हुआ हो उसके बारे में बात होती है, और दूसरा इसमें आप जो आपका डूअर है आप उसके बारे में चर्चा नहीं करते। अगर आप चर्चा करते हैं तो सिर्फ काम की कि किसी ने आपके लिए क्या काम किया है, राइट। इट टोटली डिपेंडेंट कि आप डूअर को दिखाना चाहते हैं उस सेंटेंस में या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, comment। don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon to get daily updates। more you practice, more you learn। don't forget to practice। have a nice day everyone।